Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. In this video, I want to talk to each NEET UG aspirant about something called as the fifth notebook, a concept called as the fifth notebook. Now, I don't want to take credit from the person who actually invented the concept of 20th notebook in NEET PG, that is Dr. Rohan Khandelwal. But this is something which a NEET UG aspirant can also implement in their life. This concept of 20th notebook or concept of fifth notebook is based on the fact that we human beings, हमारी memory sucks. Sooner or later, we tend to forget things that we need to revise again and again and again. Now that is what is the concept of 20th notebook is. So नीट पीजी के टाइम पे क्या होता है ना, 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट्स, सबको याद रखना मुश्किल हो जाता है. कुछ याद रहता है, कुछ चीज़ें बार बार भूलते हो, हर बार भूलते हो. तो उन चीज़ों को ना लोग क्या करते हैं, 20th नोटबुक में इकट्ठा कर लेते हैं कि आखिरी दिन ना हम ये पढ़ के जरूर जाएंगे, बिकॉज ये हमें वैसे ही याद नहीं रहना. बट इट इज समथिंग विच इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एग्जाम में पूछा जाएगा. The same concept can be applied as far as NEET UG is concerned. You have 4 subjects, technically 3 subjects, but मैं 4 मान लेता हूँ आज की डेट में. फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology and botany. तुम्हारी एक फिफ्थ नोटबुक होनी चाहिए. दिस फिफ्थ नोटबुक शुड कंसिस्ट ऑफ समथिंग विच यू थिंक कि ओके आई रेड इट नाउ, but will I remember it 10 days down the line, or will I remember it 20 down the line, or will I forget? And you put that thing down in the 20th notebook कि ये चीज़ मेरे को अपने आखिरी एक हफ्ते में, आज नहीं, not today, you're preparing for the future self, that 6 months down the line, 7 months down the line, 1 week before the exam, when I have so much to revise and give the exam, this is the thing that I know that I tend to forget again and again, and I have to revise because it has a high probability of appearing in the exam. So this fifth notebook is you are simultaneously, while you are reading something, you're simultaneously preparing for revision of that material. Now, what should this fifth notebook contain? In physics, it should contain the formulas, which you think you tend to forget, but are asked again and again. क्वेश्चन टफ होगा, बट एक सिंपल फॉर्मूला होता है, बट सिंपल फॉर्मूला भी याद करना मुश्किल हो जाता है. सो यू राइट डाउन दैट फॉर्मूला. एवरी चैप्टर विल हैव सम फॉर्मूलाज. ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये सबको याद रहेगा. ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट एफ इज इक्वल टू एम ए, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. बट थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं, स्पेशली इन मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियस, इनमें ऑप्टिक्स में कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें कभी कभी याद नहीं रहते. एंड यू वोंट हैव टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम टू डिराइव. लेट मी क्लियर यू दैट यू नीड टू रिमेंबर द समटाइम्स द फॉर्मुलाज एंड यू विल easily get the answer. तो set of formulas which you think you tend to forget in physics chapter wise, whenever you're reading a chapter you think कि यार ये फॉर्मूला मेरे को याद नहीं रहेगा, उसको अपनी फिफ्थ नोटबुक में डाल लो. In chemistry, especially as far as inorganic chemistry is concerned, metal ores, exceptions जो कभी कभी याद नहीं रहती हमें, यार ये वाला सीरीज ऐसे चल रही होती है और ये एक्सेप्शन है. If you don't tend to remember that, write it down in your 20th notebook. In your fifth notebook, 20th notebook मेरे दिमाग में इतना चला हुआ है. Organic में named reactions, mechanism, सारे mechanism नहीं, there are some mechanisms which you won't forget. There are some mechanisms you tend to forget again and again. जब practice करोगे तो realize होता है. Write it down in your fifth notebook. In biology, important lines of NCERT from previous year questions which you think that you tend to forget, लिख लो. एक नोटबुक और क्रिएट कर लो जो तुम्हें अपनी आखिरी 4 या 5 दिन में एक बार रिवाइज करनी है. सो वट एवर यूर रिवाइजिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, और MCQs that you are giving in the last 4 days. So you're not preparing for the exam, you're preparing for the last 3-4 days before the exam, where you will revise the most volatile things that you tend to forget again and again. And since you have revised in the last 3-4 days, exam ke din you won't make a mistake. So this is the concept of fifth notebook, borrowed from 20th notebook by Dr. Rohan Khandelwal. Don't want to take any credit away from him, but I think this can be a game changer as far as your NEET UG preparation is concerned. And that's my 5 minutes for you today. Thank you and have a nice day.